अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और काउंसलिंग के मुख्तलिफ सेक्शंस का चैप्टर्स का मुताला भी कर रहे होंगे। अब तक तो आपने काउंसलिंग के काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लिए हुए हैं। आपको याद है कि एक पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये कहा था कि जो कुछ आप पढ़ते जाते हैं उनको साथ साथ रिवाइज करते जाएं, क्योंकि फिर ये होता है कि मैनी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आर इन फैक्ट बिल्ट ऑन द प्रीवियस सब्जेक्ट्स। तो अगर आपने वो ना पढ़े हों तो अगली बात भी समझ नहीं आती। सो प्लीज़ कीप योर सेल्फ अप टू डेट। Today we will be talking about theory underlying counseling practice. लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जिक्र टर्मिनेशन के सिलसिले में भी हम कुछ बात करेंगे। और जैसे आपको याद है पिछली दफ़ा हमने 3 चीज़ों को रिव्यू किया था, तो पहले उन 3 चीज़ों की बात करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा फिर उसी टॉपिक के बारे में जो पिछली दफ़ा हम पढ़ रहे थे उसके बारे में जो रह गया है उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे, एंड देन वी विल फाइनली मूव टू द करंट एंड टुडेज टॉपिक. So what we had studied in the previous lecture, we talked about 3 very important concepts in the counseling process. First was resistance, second was transference and counter-transference, and finally we talked about termination of whole counseling process. और ये भी बात की थी कि अगर एक इंडिविजुअल सेशन को टर्मिनेट करना हो तो किस तरह से करना चाहिए. Let's first talk about the first concept that we discussed in the previous lecture, and that was resistance. I mentioned that resistance can be in the initial session, lekin resistance can also be in the later sessions. The reason is that in the initial session usually clients are resistant because they may not want to enter in the therapy और उनको किसी और ने third party ने भेजा हो. But in the later sessions, whenever they may be talking about their internal feelings, तो ये होता है कभी कभार कि they become defensive and they don't want to talk about their inner feelings या कोई emotions के बारे में वो बात नहीं करना चाहते किसी से. और obviously जो काउंसलर है वो उसको शुरू में तो एक स्ट्रेंजर के तौर पे ही परसीव करते हैं. And sometime it happens that they are thinking about some change and that change seems very threatening, and because of that they may not be talking about their own feelings, or that is why self-disclosure becomes difficult. And then we talk about how we can remove that resistance. इसको कैसे दूर किया जा सकता है. The first and most important thing is that we should listen very carefully and actively to what the client is saying. And we should be genuine in our responses. At the same time, we should be accepting the client as he or she is. It is possible that sometimes we do not agree with what the client is saying. लेकिन as a person we should have an unconditioned positive regard for the client. अब ये एक कॉन्सेप्ट था जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया. And then we move to the concept of transference and counter transference. Transference and counter transference both can be positive or negative. Transference से ये मुराद है कि जब अपने कोई फीलिंग्स लोगों की तरफ जो हमारी फीलिंग्स होती हैं अबाउट द सिग्निफिकेंट पीपल इन आवर लाइफ, वी ट्रांसफर दैट टू द काउंसलर. और काउंटर ट्रांसफर्स का ये मतलब है कि द थेरेपिस्ट और काउंसलर आल्सो स्टार्ट बिहेविंग एंड रिस्पॉन्डिंग इन द सेम डायरेक्शन, ईदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली. People have different opinions about the effectiveness or hindrance of counter transference and transference. Some people maintain that they provide a real resistance to the therapy. The reason is that sometimes the counselor starts dealing with it directly and interpersonally rather than analytically. लेकिन इसके बरक्स कुछ रिसर्चर्स और काउंसलर्स ये कहते हैं कि if it is worked through properly and it helps us in understanding of the feelings and emotions of the client about significant others, then it becomes a real therapeutic procedure. तो ये थेरेपी में इनफैक्ट हेल्प करता है rather than creating hindrance to the therapy. And it depends also that हम उसको यूज़ कैसे करते हैं. इसका थोड़ा इस्तेमाल जो है इस सेंस में कि जब काउंटर ट्रांसफरेंस काउंसलर करता है तो इट मे क्रिएट अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन काउंसलर एंड क्लाइंट, और ये एक ट्रस्ट की बुनियाद भी बन सकता है. लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा उसमें इंडल्ज हो सकता है या हो जाता है तो देन इट इज़ ऑब्वियसली नॉट गुड फॉर द थेरेपी, बिकॉज द काउंसलर कुड नॉट स्टे ऑब्जेक्टिव विच इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द थेरेपी. एंड फाइनली वी टॉक्ड अबाउट टर्मिनेशन इश्यूज.
Termination could be of a single session and of a whole counseling relationship. As far as termination of a single session is concerned, we just have to be organized and structured. हम उसे टाइम पे शुरू करें, टाइम पे ख़त्म करें सेशन को, और सेशन ख़त्म होने से 5 मिनट पहले जो है it is appropriate to summarize what we have done in that particular session, and then we can also talk about what is going to happen in the next session, and we can decide about the time and day about the coming जो sessions हैं उनके बारे में. And then it is also appropriate that if the client comes late, तो हम वो टाइम उसका डिडक्ट कर ले उसके टोटल टाइम में से. ये नहीं कि जब वो लेट आता है तो हम उसको पूरा टाइम देते हैं. इन दैट वे द क्लाइंट मे बिकम डिपेंडेंट ऑन यू कि जब भी आप वो जिस मर्जी टाइम आए उसको पूरी काउंसलिंग मिलती है. एक और स्ट्रेटजी ये है कि जो काउंसलिंग के सेशंस हैं उनकी तादाद कम कर ली जाए. इफ द काउंसलर रियलाइजेज दैट द क्लाइंट मे बिकम डिपेंडेंट on him or her, then it is appropriate to reduce the number of sessions. As far as ending a relationship is concerned, this is in fact more tedious, और ये बहुत sensitive issue है because sometimes the clients become very dependent emotionally and maybe cognitively on the counselor, और उनको ये लगता है कि वो काउंसलर की मदद के बगैर कोई डिसीजन ही नहीं कर सकते, and they feel very vulnerable if the counselor does not stay with him in that relationship. And sometimes this also happens that the counselor is having the same feelings. So it is a very important issue जिसको बड़ा carefully जो है वो डील करना चाहिए. और इसके लिए यही बेहतर है कि कुछ आखिरी सेशंस जब आने वाले हों, like ending 3 or 4 sessions, if it is spread over 3 months or so it is appropriate that to start talking about termination and then empower the client to take his life's own decisions, give him homework so that he learns life skills और इस काबिल हो कि वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर सके. अब इससे आगे शुरू करते हैं थोड़ी सी बात जो पिछले लेक्चर यानी काउंसलिंग प्रोसेस से जिसका ताल्लुक है वो पहले डिस्कस करते हैं. देन वी विल मूव टू द टुडेज टॉपिक एंड दैट इज थ्योरी in the practice of counseling. What is the appropriate time of termination? That is the next question. There is no one answer when termination is to take place. Questions you may wish to ask yourself concerning termination include the following. There is no time which could be called ideal for termination, and it depends on the problem and on the individual. Some clients, as I had mentioned when I was showing you a contract of 2 counselors, और वो जो काउंसलिंग का कॉन्ट्रैक्ट था उसमें ये मेंशन था कि हम जब काउंसलिंग सेशन करते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट्स आल्सो दैट हाउ मेनी सेशंस दे विल रिक्वायर. सम क्लाइंट्स रिक्वायर मोर सेशंस और कुछ जो क्लाइंट्स हैं वो थोड़े सेशंस में भी अपनी गोल्स अचीव कर लेते हैं. सो इट रियली डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम एंड द पर्सन कंसर्न्ड. लेकिन इसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जिसका अब हम जिक्र कर रहे हैं. अब ये क्या क्या बातें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि अब टर्मिनेशन जो है वो पॉसिबल है. फॉर एग्जाम्पल, हैव क्लाइंट्स अचीव्ड बिहेवियरल, कॉग्निटिव और अफेक्टिव गोल्स. सो व्हाट वर आवर गोल्स फॉर द क्लाइंट? बल्कि सिर्फ हमारी नहीं, क्लाइंट्स की गोल क्या थी? टू हैव मास्टरी और इमोशंस, अफेक्टिव, बिहेवियरल, improvement in our functioning behavior and cognitive, या फिर जो कुछ हम सोचते हैं उसमें improvement चाहिए थी. maybe there is a faulty perception, thinking, आप उसको improve करना चाहते हैं. so what was the problem and what was the goal? तो have we achieved that? बेशक सब नहीं, कितना अचीव हमने उस गोल को कर लिया है? This is one question. The second question is, can clients concretely show where they have made progress in what they wanted to accomplish? क्या हम ये मॉनिटर कर सकते हैं कि किस किस एरिया में प्रोग्रेस नजर आती है? You remember when we were talking about goals, then we discussed this, that the goals must be specific, focused, measurable, quantitative and observable. If they are not observable, you can't judge the change between the previous and current situation, then how you would know that you have achieved this particular goal? So it must be apparent enough
to notice any significant change in the behavior, feeling, actions of the client. The last question is the counseling relationship helpful? आपको ये लगता है कि जो काउंसलिंग आपने प्रोवाइड की है, it has provided some help, कुछ उससे फ़ायदा जो है वो क्वांटिटेटिवली या ऑब्जर्वेबली हमें नज़र आना चाहिए. तो इन क्वेश्चंस की बुनियाद पर आप फैसला कर सकते हैं कि टर्मिनेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. Another important concept is premature termination. It is not always essential कि termination is most difficult. Sometimes you have to terminate prematurely. For example, you would have decided about 12 sessions with a client, but it's not possible after 3 sessions. What happened? Sometimes this premature termination is initiated by the counselor and sometimes by the client. कैसे? Many clients or counselors may end counseling before all goals are completed. So like I said before, you would have conceived the completion of goals, let's say around 10 to 12 sessions. लेकिन उससे पहले ही या तो क्लाइंट या काउंसलर कह देता है कि इसका इख्तिताम हो जाना चाहिए. अब कैसी सिचुएशन हो सकती है? इफ इट इज फ्रॉम द क्लाइंट साइड, द क्लाइंट मे नॉट बी सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज ही इज गेटिंग फ्रॉम द काउंसलर. ही मे बी थिंकिंग दैट द काउंसलर इज इनकॉम्पिटेंट, इज नॉट कैपेबल टू डील विद हिज प्रॉब्लम, और मे बी ही इज जस्ट अनकंफर्टेबल विद द पर्सनैलिटी ऑफ द काउंसलर. अगर हम काउंसलर का पर्सपेक्टिव देखें तो काउंसलर मे बी थिंकिंग दैट ही इज नॉट कंफर्टेबल विद द क्लाइंट, ही इज हैविंग सम काउंटर ट्रांसफरेंस एंड ट्रांसफरेंस इश्यूज, so he doesn't want to stay with that client in a relationship. And other reason could be that he thinks that the problem this client is having doesn't come under the domain of his specialities or expertise, और वो चाहता है कि इसको किसी को रेफर कर दे. So at times a counselor needs to make a referral, तो उसको रेफरल करना पड़ता है. For example, if some client comes to me and I think he should go to some family counselor because the problem seems to be lying in the family interactions, and I am not trained in that particular approach, तो फिर बेहतर ये है, प्रोफेशनल जो बात है वो ये है कि आई शुड रेफर रादर देन मैं उसके ऊपर स्टिक करूं और फिर सही रिजल्ट भी बरामद ना हो. व्हेन दिस इज डन, स्पेसिफिक इश्यूज नीड टू बी एड्रेस्ड विद द क्लाइंट. जब आप रेफर कर देते हैं, चाहे क्लाइंट की ख्वाहिश पर, चाहे काउंसलर की विजडम पर, तो आपको कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेनी चाहिए क्लाइंट के साथ. नंबर 1, रीजन फॉर द रेफरल. इट शुड बी वेरी क्लियर रादर देन जस्ट लीविंग इट इज एम्बिगुअस के बस बेहतर ये है कि आप चले जाएं. इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट. जस्ट टेल हिम द राइट रीजन. सेकेंड, हैव द नेम्स ऑफ सेवरल अदर काउंसलर्स रेडी फॉर रेफरल. हु इज द अप्रोप्रिएट वन हु कुड टेक दैट क्लाइंट. आपके पास ये फहरिस्त होनी चाहिए और आपको डिस्कस कर लेना चाहिए ये क्लाइंट के साथ. एंड यू मे आल्सो डिस्कस द कॉन्फिडेंशियलिटी इशू. इफ यू आर रेफरिंग दैट क्लाइंट टू सम अदर काउंसलर, तो आप क्लाइंट को बता दें कि बिकॉज दिस इज अ कॉन्फिडेंशियलिटी इशू, आई मे नॉट फॉलो यू अप. अब अगला काउंसलर जो है वुड नॉट लाइक टू शेयर हिज रिकॉर्ड्स अबाउट यू विद मी, तो आई वुड नॉट इंटरफेयर. सो द क्लाइंट शुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग कि ये जो ये वाला काउंसलर है वो भी उसको फॉलो करता रहेगा और वो परहैप्स दोनों मिलके इसकी मदद करेंगे या जो भी प्रोसीजर है उसमें दोनों पार्टिसिपेट करेंगे. सो द नेक्स्ट एंड फाइनल पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस now in reference to counseling process is follow-up procedure. At times follow-up is used for various reasons, including research or checking in with client. So when the termination is done, then you may have to off and on see that how the client is doing. It may be for the research purpose. आपने research के लिए देखना हो कि what is going on with the client, अब वो कैसा feel कर रहा है, और ये भी हो सकता है कि you want to evaluate the effectiveness of some technique. कि ये किस तरह से चल रही है. और मे बी इट्स अ जनरल प्रोसीजर कि आप फॉलो अप जो है वो कुछ अर्से के बाद करें कि वेदर एवरीथिंग इज राइट विद द क्लाइंट और नॉट. फॉलो अप्स नीड टू बी स्केड्यूल्ड so as to not take the responsibility of change away from the client. Follow up should not be like that कि you are calling
एवरी अदर डे या फिर हर हफ्ते आप फ़ोन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं जी आप कैसे हैं, बिकॉज इन दैट वे द क्लाइंट कैन नॉट बिकम सेपरेटेड फ्रॉम द काउंसलर. तो आप कुछ उसको स्पेस दें, टाइम दें. यूजुअली फॉलोअप जो है वो 1-2 महीने के बाद जो है वो किया जाता है. नाउ वी विल बी मूविंग टूवर्ड today's lecture, and that is again a very important issue, theory in the practice of counseling. In the next many lectures we will be talking about different theoretical orientations underlying counseling profession. लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि आप importance of the theory in the counseling इसके बारे में पढ़ लें और ये भी देखें कि जो different theoretical orientations जिनका मुताला आप अगले lectures में करेंगे, what are the theories behind them? कौन सी थ्योरी को लेके वो जो काउंसलिंग की डिफरेंट थ्योरेटिकल ओरिएंटेशंस हैं वो चल रही हैं. So what is theory? That is the first question. A theory provides a structure from which to understand what we are doing and the process of doing it. So it is a very important step कि हमें पहले जो काउंसलिंग हम कर रहे हैं उसकी थ्योरी का पता चले. Why we have made that theoretical orientation? What is the logic behind that? There are some questions which are relevant to the construction of theory. For example, the first question could be, does theory provide hindrance or facilitation to the counseling practice? Another thing is, shall we strictly adhere to one theoretical orientation, or we could, after analyzing, critically analyzing, we can use a combination of different theories. और जो कुछ हमें theories में अच्छा नज़र आता है क्या हम उसको combine कर लें. Another question could be, what are the elements of commonality between different theories? कोई उनमें मुश्तरका चीज़ें भी हैं. And the final question could be, although it may not be final क्योंकि आपके जहन में और लोगों के जहन में भी और बहुत से questions theory से related आ सकते हैं, but what I am going to discuss उस reference में मैं कह रही हूँ, the final question could be that what theory is nearer to your expectations of counseling or what you desire in a counseling. आपको कौन सी theory जो है वो इसमें बेहतर लगती है according to your cultural context. So these are the few issues which are important when we are discussing theory underlying practice of counseling. और theory जो है हम ये कह सकते हैं, it in fact provides a framework for the interventions that we are using in the practice of counseling. Why we have a theory? Does it provide a therapeutic roadmap or creates a sense of false certainty? This is the next question. There is quite a debate on this issue. Some people maintain that theory creates control and structure to the practice of counseling. या जहाँ भी theory बनाई जाती है, they provide structure to the theoretical orientations and they are essential for the interventions. But some people maintain that if the theory जो है एक theoretical orientation की या किसी एक approach की base बनती है, it may not have sufficient knowledge. तो उसकी knowledge ही इतनी ज़्यादा ना हो और वो theory जो है वो ही basically correct ना हो, तो उसके ऊपर जो फिर आप foundation बनाएंगे, that will not be able to generalize or to conclude in a valid way. Basically अगर theory में कोई error रह जाता है and we think that theory is certain, it is absolute, then the approach we are using, which is basically related with that theory, will not be successful in the practice of counseling. बहुत सारी theories जो हैं उन पर एतराज़ भी किया जाता है, जैसे psychoanalytic theory है, उस पर आजकल बहुत एतराज़ होते हैं, बल्कि काफ़ी अरसे से हो रहे हैं. Many people do not agree with the sexual concepts of psychoanalytic theory. तो इट डिपेंड्स कि कौन कौन सी थ्योरी जो है वो उसके पॉइंट्स वैलिड लगते हैं या नहीं, और अगर वो पॉइंट्स ही वैलिड ना लगें तो फिर आप जिस अप्रोच को उसके ऊपर बेस करते हैं वो भी वैलिड नहीं होती. सो विल बी टॉकिंग अबाउट 3 different theories of counseling. Actually, we have discussed while we were talking about historical background of counseling profession that counseling is a relatively new discipline. It has borrowed concepts from different disciplines of social sciences, for example, psychology, sociology and philosophy. So it has roots in several different disciplines of social sciences. अब ये सारे जो concepts हैं
वो मुख्तलिफ डिसिप्लिन से लिए गए हैं और उसकी बेस पर डिफरेंट थ्योरीज जो हैं वो इमर्ज करती हैं। अब हमें जो थ्योरेटिकल ओरिएंटेशंस नज़र आती हैं या अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, दे हैव ईदर दे आर बेस्ड इन फिलोसफी और इन साइकोलॉजी और इन सोशियोलॉजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड बी डिस्कसिंग philosophical foundations. In a healthy personality, the individual has a realistic perception of himself. He knows what he wants and how much he wants it. The person knows if he is a healthy person. When we say healthily, तो इससे मुराद ये है कि mentally healthy और physically healthy also, क्योंकि physical और mental health का भी आपस में ताल्लुक है. But here more we are referring to the mental health. तो इन अ हेल्दी पर्सनैलिटी, बिकॉज वी आर सेइंग पर्सनैलिटी, जब पर्सनैलिटी एक हेल्दी होगी तो द पर्सन विल नो व्हाट ही वांट्स, बट द प्रॉब्लम लाइज हाउ टू गेट इट. सो अ गोल ऑफ काउंसलिंग इज टू हेल्प इंडिविजुअल्स टू रीच देयर मैक्सिमम पोटेंशियल, which can occur only when they develop consistent philosophical outlook. So people who are following philosophical orientation, they maintain that people know what they desire, but they do not have that awareness about their potential. They do not know how much potential they have for particular thing और किसी चीज़ के लिए उनकी क्या capability है. And it is the job of the counselor to make the person aware of that. और जो barriers हैं उनको वो दूर करे जो इस रास्ते में है इस awareness के. और इसके लिए एक philosophical orientation की ज़रूरत है. वो philosophical orientation क्या है ये अभी आगे चल के बात करते हैं. Some people point out that there is no place of philosophy in the scientific study of human behavior. लेकिन इसके बरक्स कुछ लोग ये भी कहते हैं कि विदाउट फिलोसफिकल अप्रोच आप बिहेवियर की बात ही नहीं कर सकते. सो मैं फॉर एग्जाम्पल इन 1967 पॉइंटेड आउट दैट एवरी साइंटिफिक मेथड रेस्ट्स ऑन फिलोसफिकल प्रीसपोजिशंस और अजम्पशंस. तो अगर साइंटिफिक डिसिप्लिन भी है तो उसके लिए कुछ थ्योरेटिकल और फिलोसफिकल फाउंडेशन चाहिए, जो कि कुछ क्वेश्चंस रेज किए जाएंगे और उसके बेस पर वो उन सवालात का जो साइंटिफिक डिसिप्लिन है वो जवाब देगा. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फिलोसफिकल अप्रोचेज और पोजिशंस. बेसिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द फिलोसफिकल अप्रोचेज इज अ बिलीफ इन द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल. द फिलोसफिकल अप्रोचेज मेंटेन दैट द पर्सन इज accepted as he is rather than how much he can accomplish. आपने उसको उसकी सक्सेस से नहीं उसकी रिस्पेक्ट करनी, because that really depends on circumstances और maybe आपको as a counselor उसको promote करना है. So you would not appreciate a person because on the basis what he has done, but on the basis what he can do. And they believe that every person has this dignity and worth to perform very effectively in their life. अब एक चीज़ जो है वो और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे समझने की कि there are some differences in Eastern and Western approaches also. This philosophical position has actually long roots in the history of human behavior. But basically the idea of human individuality and freedom has come from Western philosophers. और ईस्टर्न अप्रोचेज जो हैं वो थोड़ी सी इससे डिफरेंट हैं, बिकॉज ऑल ईस्टर्न और यू कुड से दैट अदर कल्चर्स मे नॉट बिलीव इन दैट इंडिविजुअलिटी ऑफ द पर्सन एज द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो इसीलिए ये भी बाज़-औक़ात कहा जाता है कि जो सारी वेस्टर्न अप्रोचेज हैं वो मे नॉट बी सूटेबल फॉर पीपल हु आर लिविंग इन डिफरेंट कल्चर्स. और इसमें कभी कभार हमें कॉन्फ्लिक्ट भी देखने में आता है. और ये कहा जाता है कि जो मेजर थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग हैं दे आर इन फैक्ट developed in Western countries. That is why they are representing their population in a better way. So according to this philosophical approach, the work of the counselor is to promote that individuality and freedom. And if this is done in another culture, for example in some Asian culture like Pakistan, so it may not work that properly as it would in a Western country. Then we will be talking about next about another concept, that is Arbuckle's concept. Arbuckle's 1975 philosophical model maintains that a responsible and free individual is that who is having certain traits. What are the traits of a free and responsible individual according to this particular philosophy? Number one, that the person
should have less gap between his attitude and behavior. And secondly, the person should not impose his values on another person. अब इसके अलावा कुछ और खसाइस भी हैं of a free and responsible individual, but I am mentioning here two most important ones. Another concept which has been presented by Blocher, and Blocher has in fact grouped relevant philosophical systems into three categories. अब ये तीन categories को उसने combine किया है. All the contemporary philosophical approaches have actually been categorized into three, and these are essentialism, progressivism, and existentialism. Let's talk about them one by one. What is essentialism? Actually, it refers that individual's destiny is to discover truth by distinguishing between the essential and the accidental. So it refers to the existence of beliefs in fixed and unchanging absolutes of the good, the truth, and the beautiful. So it maintains that the facts are universal, values should be universal, and individuals should not divert from them. As compared to that, the other approach, which is called progressivism, it says that such systems begin not with the assumptions of universal truths, but with specific and particular experiences. The question, what is true, is less important than what will work. So the fact is not which is truth. The fact is determined by the usefulness of an idea. Because progressivism के जो हामी हैं वो ये believe करते हैं कि universal truths नहीं होते. Because people can define truth in their own way. Like जैसे कहते हैं कि जो beauty है is in the eye of the beholder. Similarly, values are relative. जो मेरी values हैं may not be perceived very positively by another person. So, these people, या counselors who are working under this theoretical orientation, they believe that if counselor very strictly and firmly believes in absoluteness of truths and values, then he would not allow his clients to move in a different direction. तो अगर truths हैं वो relative हैं और अगर जो beauty है वो भी relative है, तो similarly हम ये कह सकते हैं कि जो truths हैं they are in fact dynamic in this world which is changing at every moment. तो ये जो world change हो रही है उसमें truth जो हैं वो कैसे constant रह सकते हैं? They cannot stay absolutely correct or right or wrong. तो this concept is very pragmatic and in fact different from the previous approach. What is the third concept of existentialism? Existentialism is concerned with human longing and with seeking for importance within the individual self. Everybody should develop his or her own meaning of life, usefulness of life, and the work of the counselor shall be reconstruct the individual meaning according to the individual client. So basically, this is concerned with thinking about whether we are following those values which are meaningful in our life and they are giving meaning to our life and personality. So as compared to previous philosophical approach, sociological approach would have different emphasis and focuses. The first question is, what is sociology? Sociology is the study of social group behavior. और sociology की जो theories हैं which play a dominant role in the practice of counseling, उसके बारे में अब हम बात करते हैं. Basically, a basic premise of sociology is that people's behavior is largely determined by their social interactions, their relationships as individuals and as group members. So how people are performing in groups, how they are interacting and performing as a group, we are concerned with this particular thing while we are talking about sociological approach. So basically we are looking at three things. First is influence of social organization on individuals. When different social organizations will be affecting individuals, then individuals will be behaving in different ways. For example, individuals may conform to what the group and organization demands. So conformity can be shown.
As compared to that, there could be some other coping modes which could be adopted. For example, the person get rebellious. जो भी social pressures हैं उनके जवाब में people can become rebellious. People can withdraw, retreat. या फिर people could perform in some ritualistic actions as are demanded by that participation in that particular group. So there could be different coping modes that individuals have to adopt as a part of that particular social organization or different organizations. This is the first thing. Secondly, there is a socialization process. This socialization process, in fact, helps individuals to conform or to adjust to different social agencies and organizations. Basically, this is not promoting the concept of ideas of individuals, but it is concerned with the promotion of group motives. तो आप ग्रुप के मुताबिक जो है वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं. द थर्ड थिंग इज डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज. व्हेन यू आर पार्ट ऑफ सर्टन सोशल ग्रुप्स, तो देन इट्स वैल्यूज आर ऑब्वियसली अफेक्टिंग यू एंड योर एक्शंस. Whatever we have learned through long-standing roots or relatedness with different cultures, they are obviously affecting our personalities. अब जो काउंसलर है अगर उसकी सोशियोलॉजिकल रूट्स हैं तो वो उसके मुताबिक ही इंडिविजुअल बिहेवियर जो है उसकी वजाहत करेगा और उसकी सारी इंटरवेंशन जो हैं वो उसी पर बेस बनेगी. सो द काउंसलर हु इज वर्किंग अंडर दिस मॉडल will be believing that different social organizations could impact individuals and individuals in response can behave differently, and then what shall be the role of the counselor in that particular sociological scenario. The final one is psychological foundation. Psychological foundation की जब हम बात करते हैं तो we will be talking about two things in particular. One is the impact of social psychology and secondly learning perspectives. अब psychology जो है, it is in fact, you could say psychology is a discipline which has several disciplines interrelated. तो काउंसलिंग एक नया प्रोफेशन है, relatively नया प्रोफेशन है, तो साइकोलॉजी की बहुत सी फील्ड जो हैं उनका असर हमें काउंसलिंग प्रोफेशन पर नजर आता है. So the most important contribution is from social psychology. Social psychology का क्या इसमें रोल है? Let's see that. Behavior is a product of the perceptual field of the individual at the moment of action. So theories of social psychology maintain that a person's behavior is determined by his or her particular and specific perceptions. जैसी situation है, individual की perception may not agree with that. अब जब हम situation का effect देखेंगे तो that actually will be determined how the person is going to perceive that. The person may be viewing or perceiving a particular situation very threatening because it really depends on his or her perceptions, or our response really depends on that particular perception. We may be behaving, for example, defensively, aggressively to a situation because we are perceiving it as threatening. As compared to that, the same situation is perceived not threatening by another person. So it really depends on the person's perceptions that how he is going to perceive his environment and the world in which he is living. There are several factors which could affect our perceptions. Number one is our personal and very, you could say, individual aspects. For example, people will be perceiving the world according to their gender, their needs, their values and their motives. And that is why it will be different across individuals. The second important factor actually lies in the intrinsic characteristics, you could say, intrinsic value of the situation. वो situation कैसी है? That also depends on that. सिर्फ आपकी परसेप्शन जो है वही डिटरमिन नहीं करती कि आप किसी चीज को कैसे व्यू करते हैं, बल्कि वो सिचुएशन भी जिस तरह की है उसके मुताबिक आप उसकी तरफ बिहेव करते हैं. एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज योर कल्चर. You will always be perceiving things in your cultural context. So three of these factors, your personal factors, then situational factors
and your cultural factors determine your individual perceptions. इसीलिए एक शख्स की परसेप्शन दूसरे शख्स की परसेप्शन से बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिकॉज दीज थ्री फैक्टर्स आर कंबाइंड इन द परसेप्शंस. और ये तीनों जो हैं वो हर एक शख्स के लिए एक जैसे नहीं होते. ऑब्वियसली दे आर डिफरेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पर्सनल फैक्टर्स आर दोज विच क्रिएट actual differences in the perceptions of people. So what is the role of the counselor? The counselor must understand the nature of the individual's perceptual experiences. Counselor को ये understand करना चाहिए कि how the person is perceiving a particular environment. उसकी perceptions को समझना चाहिए, and what are the factors that are contributing to that perception. और उसकी रोशनी ही में फिर उसकी जो काउंसलिंग थ्योरी डिटरमिन होगी और उसकी जो इंटरवेंशंस हैं वो भी उसके मुताबिक ही चलेंगी. द नेक्स्ट साइकोलॉजिकल फाउंडेशन इज इन द लर्निंग प्रिंसिपल्स. द बिहेवियरल थ्योरीज टेंड टू एम्फसाइज द आइडिया दैट लर्निंग इज एसेंशियली अ मैकेनिकल मैटर. आपने लर्निंग थ्योरीज का कई दफ़ा जिक्र अपने साइकोलॉजी के कोर्सेज में पढ़ा होगा. There are several different perspectives as far as the model of learning is concerned. One perspective which was promoted by Dr. Watson and Thorndike was that behavior is determined by the kind of stimulus. जिस तरह का stimulus होगा हमारा उसके जवाब में वैसा ही रद्द अमल होगा. So it is quite a mechanical approach कि जैसा stimulus मिलता है वैसा ही response देते हैं. अब इससे तो ये जाहिर होता है कि देयर कुड नॉट बी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बिकॉज इट रियली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ द स्टिमुलस. जिस तरह का स्टिमुलस होगा वैसा ही हर शख्स बिहेव करेगा उसके मुताबिक, एंड इट डज नॉट मैटर दैट हु इज रिस्पॉन्डिंग. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप स्टिमुलेशन में क्या प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट इज वाई दोज पीपल हु आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिकल मॉडल दे विल बी डीलिंग विद देयर क्लाइंट्स in that particular way while they are counseling. As compared to that, field theories of Kurt Lewin, they emphasize on perception, eventually forced the behaviorists to stop speaking as if the stimuli were purely objective and therefore equivalent for everyone. So Kurt Lewin की जो field theory है, that is different from the mechanical approach of behaviorism, and it maintains that individual perception is important, and that is why the perception of people are not same for everyone. That is why perception of people are different from each other. क्योंकि एक stimulus और response के दरमियान एक और चीज़ है, that is the individual. And individual would look at the situation in his or her own way, and that will determine the differences between perceptions of different people. The third approach is cognitive theorist approach. Cognitive theorists conceptualize learning as an active restructuring of perceptions and concepts. It means that it is not perceived as passive response to stimuli. So it means whatever you are perceiving, it is your own perception, and it could be distorted by your thinking. आपकी thinking involved है whatever you are perceiving, and your thinking makes it positive or negative. And the role of the counselor is to reconstruct that perception if it is faulty or if it is dysfunctional. और सारी जो cognitive behavior therapy है वो actually base ही इस पर करती है. तो आपने ये देखा कि किस तरह से आपकी जो theory होगी उसके मुताबिक आपकी intervention चलेगी. If you believe that people shall be given importance for what they are, and we should not go into the techniques यूज करने पर ध्यान नहीं ज़्यादा होना चाहिए, बल्कि हमारा ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पर होना चाहिए कि how we are responding toward the individual. If we are respecting a person, listening carefully to what he says, and we value that individuality of that person, in itself this is therapeutic. As compared to that, जो sociological approaches हैं, they maintain that the person behaves in a particular way while a part of different social organizations, और socialization process के नतीजे में वो different तरह से perform करना सीखता है जब उस पर group के pressures होते हैं. और the counselor's role is then to look at the forces and pressures of social organizations, and also look at the cultural factors that are important in the perceptions and behaviors of people.
इसकी बजाय जब हम तीसरी अप्रोच की तरफ जाते हैं, साइकोलॉजिकल अप्रोच इज कंसर्न्ड मोर विद योर लर्निंग इन द एनवायरनमेंट एंड हाउ यू विल बी बिहेविंग इन रिस्पॉन्स टू वन पर्टिकुलर स्टिमुलस, या फिर आप अपनी परसेप्शंस जो हैं वो उसके मुताबिक बिहेव करेंगे, एंड देन इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू योर इंडिविजुअल परसेप्शंस। और इसमें हमने फिर सोशल साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स का जिक्र किया, फिर लर्निंग थ्योरी का भी इसमें जिक्र आया। अब आपने ये देखा कि एवरी थ्योरी हैड अ पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक ओरिएंटेशन. They will be emphasizing dignity of human beings, or they will be looking at the mechanical learning procedures, or they will be giving importance to cognitive restructuring of the stimulus, or uske accordingly people are supposed to behave. So what we can do? Are we strictly following one philosophical approach, या फिर हम सोशियोलॉजिकल अप्रोच को फॉलो कर लें, या फिर हम साइकोलॉजिकल अप्रोच के पीछे चलें? So modern day counselors in fact are taking the best from all theoretical orientations. So eclectic approaches in fact refer to developing systematic blends of therapy by drawing ideas, concepts and practices from a variety of sources. So this is one approach that you look at all theoretical orientations, and whatever is suitable toward your cultural context, you pick up the best element from that. और जो चीज़ आप avoid करना चाहते हैं, जो आप समझते हैं कि may not be effective for your client, you just leave that. So it has the advantage of taking the best feature of the various theories while avoiding the disadvantages found in the theories. So the advantage of eclectic approaches is that you take the best from each theoretical orientations and you leave the disadvantaged ones, and then you pick one particular theoretical approach which may be suiting to your environment, to your culture and to your client. तो eclectic approach जो होती है वो basically इस चीज़ पर depend करती है कि काउंसलर की perceptions भी क्या हैं और उसके मुताबिक वो उसमें से best element pick करता है. So this was all about today's lecture. Let's review what we have done today. Today in the beginning we talked about a few issues which were related with termination. And in the beginning of the session, in the beginning of this particular lecture, we talked about the timing of the termination. Are there any ideal timing of the termination? कौन सा वक्त है जब terminate कर देना चाहिए? Obviously there is no ideal timing for termination because that really depends on the counselor's client's mutual understanding. उसके अलावा on the problem of the client and the type of the client you are dealing with. So it really varies from person to person and from problem to problem. लेकिन there are some indications which can be used as guidelines for deciding whether termination at that particular point is appropriate or not. For example, you can see whether you have achieved the goals that were conceived in the beginning of the session. जो goals client ने सोचा था या आपने उसके लिए सोचा था, क्या आपने उसमें से कुछ को या सबको achieve कर लिया है? Or you can also see whether there is some quantitative observable change in your client or not. And then finally you can see whether counseling was helpful, effective or not. If you have achieved these goals, then obviously you can decide that this may be the right time for termination. And then we talked about premature termination. Premature termination जो है उससे मुराद ये है कि कभी कभार तो ये होता है कि आप termination कर नहीं पाते because the client or the counselor are emotionally attached or dependent on each other. As compared to that, premature termination में you have to terminate before your goals are actually achieved. And it may be initiated by the client or the counselor. The client may be not satisfied with the services he is getting from the counselor, or counselor may be thinking that he is not competent enough to deal with the problem that that particular client would be having at that time. So he could be thinking that it is perhaps more appropriate that he should refer this client to some other counselor who has more expertise in that particular area. And then we talked about, finally, in reference to counseling process, about the concept of follow-ups.
Follow-ups are essential sometime for research purpose. You are conducting some research and you want to see what is happening with the client. और आपने कोई अपनी hypothesis बनाई होती है, उसके मुताबिक आप client को देखना चाहते हैं. Or it may be possible that you want to evaluate the effectiveness of some therapy. So this was in relation to counseling process what we have discussed today. Then we moved on to the next topic, and that is theory underlying the practice of counseling. We talked about the importance of theory, why it is essential to have a theory. अगर theory नहीं होगी तो आप एक चीज़ organized और structured way से नहीं कर सकते, और जिस चीज़ की कोई फाउंडेशन या कोई थ्योरेटिकल बेस ही नहीं होगी तो आप उसकी इंटरवेंशन जो है उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं. बट इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट एट द सेम टाइम दैट थ्योरी शुड बी वैलिड एंड रिलायबल. इफ इट इज़ बेस्ड ऑन सम इनसफिशिएंट नॉलेज तो देन द फाउंडेशन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, तो फिर वो इंटरवेंशन जो है वो भी सूटेबल नहीं है. वी टॉक्ड अबाउट 3 particular approaches as far as theory of counseling is concerned. One is philosophical approach, and the other is sociological, and the last one is psychological approach. As far as philosophical approach is concerned, we talked about different approaches जो कि ये कहती हैं कि we should respect individual, we should respect the individuality and freedom of the client, and also we talked about 3 different groupings of philosophical approaches. One is essentialism, the other is progressivism, and finally we talked about existentialism. As compared to philosophical approach, sociological approach obviously focuses on some different dimensions. Sociological approach discusses in fact that what is the role of individual organizations on the individuals, और उसके बाद what is the socialization process that help the individual to adapt or fit to get himself or herself fitted in that particular organizational structure. And then we also talked about importance of cultural factors in this particular dimension. Finally, we talked about psychological issues, और psychological जो positions हैं उसमें हमने जो 2 बातें आज की हैं वो है importance of social psychological concepts, which maintains that individual perceptions are actually determined by how a person perceives the situation, and that is why one person's perception are different from another. And then finally we talked about learning perspective, or learning perspective में we talked about again different models. Some models talk about the mechanical aspect of stimulus and response, while others give more importance to cognitions and individual perceptions. So this was all about today's lecture. अगले lecture से अब हम different theories को अलग अलग पढ़ना शुरू हो जाएंगे, and that is again a very important area. तो अगले lecture में फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज.